Tips and tricks to learn law subject as a law student. This is one of the highly requested videos that please हमें बताओ what we should do so that we are able to learn, we are able to remember the law subjects in our exams. I'm going to also talk about some of the common mistakes that students commit while they're dealing with law subjects, right? If you are a student who is studying law subjects, then this video is a must for you. So guys, welcome to episode number 5 of Law Student Study Tips. In this series, what we are doing is we are picking up topics that are going to help law students. We have done 4 episodes already. Like, we have done a video on how to study law subjects, then we have done a video on how to make notes for law as a law student, then we have done a video on how to write your answer in the law exams. We have done a video wherein I have suggested you that from which textbooks you should study. And yeah guys, welcome to Law Giri. I hope you have subscribed to Law Giri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Law Giri. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Law Giri, then do follow us on Instagram. Step 1 is to avoid certain mistakes. So number one mistake that you should avoid is that you should understand. One mistake that normally students make is that they mug up. वो रट्टा मारते हैं. वो क्या करते हैं? वो रट्टा मारते हैं. They do not understand. क्योंकि वो understand नहीं करते हैं, वो concept नहीं समझते हैं. It is hard to remember. It is hard to remember. So it is very important that you understand the subject and especially law and then you learn it. अगर आप उसको अंडरस्टैंड करके याद करोगे तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा और आपको ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा, जिससे कि जब आप जॉब करने लगोगे, जब आप प्रैक्टिकल वर्क करने लगोगे, इवन जब आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे, तो एटलीस्ट जो आपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो आपको याद रहेगा. तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है, राइट? तो हमेशा लॉ सब्जेक्ट्स आपने याद करने हैं, तो अंडरस्टैंड कर करने हैं, और कैसे अंडरस्टैंड करने हैं उसके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी करी हुई है, राइट? नेक्स्ट इज स्टडिंग द नोट्स ऑफ सम अदर स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूट. अब देखो, जब कोई इंस्टीट्यूट या जब कोई स्टूडेंट से आप नोट्स फॉलो करके फोटोकॉपी करा लेते हो, राइट? हर स्टूडेंट ने अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाए होते हैं. पहले तो जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं वो सिर्फ उसी स्टूडेंट को समझ में आएंगे, बिकॉज कहीं ना कुछ मिस किया होता है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाए होते हैं, उन्होंने तो बुक पढ़ी है तो उनको बहुत कुछ बुक में से भी आता है, तो उनका आंसर तो बहुत अच्छा बन जाएगा एग्जाम में. बट क्योंकि आप किसी के नोट्स पढ़ रहे हो, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, कभी भी नोट्स से कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी. अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो लर्निंग में प्रॉब्लम हुई. तो अपने खुद के नोट्स बनाओ, राइट? और इंस्टीट्यूट के नोट्स में भी या फिर जो दुक्की होती है उसमें भी यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट टॉपिक मेरा दुक्की ही है कि अनकनेक्टेड पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है ना? उन्होंने तो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया और आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स दे दिए, ठीक है ना? क्या करते हैं बेसिकली, क्या करते हैं वो पॉइंट, एक टॉपिक लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके पॉइंट्स दे दिए 5 to 6, ठीक है? और फिर कहते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन आप अपने आप बना लो, राइट? ऐसा सही होता है, या थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे देते हैं और फिर आपको खुद से एक्सप्लेन करना होता है जो भी आपका मन में आता है, राइट? विच इज़ नॉट अ करेक्ट वे. आई नो शॉर्टकट है, बहुत बड़ा शॉर्टकट है, बट इस शॉर्टकट की वजह से जब आप एक्चुअली जॉब में जाते हो, जब आप एग्जाम में जाते हो, तो आपके बहुत कम मार्क्स ही आ सकते हैं. कोई आप ज़्यादा अबव एवरेज नंबर नहीं लेकर आ पाते हो, राइट? तो सबसे पहले तो किसी और स्टूडेंट के नोट्स अगर लेने भी हैं तो देखने के लिए ले लो कैसे नोट्स बनाए, बट अल्टीमेटली अपने नोट्स बनाओ, खुद बुक में से पढ़ो, चाहे बुक में ही नोट्स बनाओ, पेपर पे नोट्स मत बनाओ. इंस्टीट्यूट के नोट्स भी नहीं लेने, हम पहले बुक में से पढ़ेंगे, फिर चाहे हम अपने नोट्स इंस्टीट्यूट के नोट्स में ऐड कर लें या कुछ ऐसा कर लें, बट बुक हम जरूर पढ़ेंगे, बेयर एक्ट या बुक, राइट? दुक्की क्या होती है? दुक्की भी शॉर्ट पे दिया होता है आपके आंसर्स, और उसके अंदर भी अनकनेक्टेड पैराग्राफ्स होते हैं, कहीं से भी कुछ से उठाते हैं, तो उसमें भी समझ नहीं आता है. और मोर ओवर आपके जितने भी साथ में स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूजिंग दुक्की, ठीक है ना? तो आपका जो आंसर है वो सेम सा बनता है, तो योर आंसर इज नॉट स्टैंडिंग आउट. स्टेप 2 की बात करते हैं, मेक योर ओन नोट्स. ठीक है, हमने ये सोच लिया कि हम अपने नोट्स बुक्स और बेयर एक्ट में से ही बनाएंगे, तो हम अपने नोट्स बनाएंगे, राइट? और कैसे नोट्स बनाने उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो करी हुई है, मैं आपके साथ बैठी हूँ और मैंने खुद अपने नोट्स भी शेयर करे आप लोगों के साथ, दैट हाउ यू शुड मेक नोट्स. सो प्लीज वॉच दैट वीडियो. बट या, why you should make your own notes? Because writing helps in retaining. Why you should make your own notes? Because writing helps in retaining and remembering. हमें बचपन में याद है हमें कितना गुस्सा चढ़ता था, स्पेशली मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ता था
जब हमें बुक में से कॉपी करके नोटबुक में लिख कर लेके जाना होता था, टीचर मार्क करवा देती थी कि ये आंसर है, अब अपनी नोटबुक में लेकर आना है, लिख कर लेकर आना है. आई यूज्ड टू बी लाइक व्हाई रिपीटिशन, बुक में है तो है. But now I understand why. Because we are able to retain. When we read and write, we are able to remember for longer. Right? When we are able to read and write, we remember for longer. Then when making notes, you have to first make then copy. तो क्या होता है, पहले हम बुक है, मान लीजिए ये हमारी, पहले बुक में हम मार्क करेंगे, पहले उसको सारा पढ़ेंगे, साथ साथ मार्क करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट आंसर्स के अकॉर्डिंग अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम अपना आंसर फॉर्मुलेट करेंगे एंड फिर हम नोट्स में कॉपी करेंगे. तो राइटिंग हो गई ना. तो हम इतना जब हम रीड करें तो नोट्स बनाते टाइम 2 से 3 बार ही रीडिंग हो जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग. राइट, अगेन याद करने में ईजी होता है. राइट, इफ यू मेक नोट्स यू विल स्टार्ट स्टडिंग अर्ली. अब क्या होता है, जब हम नोट्स, हमें पता है हमने नोट्स बनाने, तो नोट्स बनाने के लिए ज़्यादा देर पहले कुछ नहीं, 1 मंथ बिफोर द एग्जाम्स अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो आपके नोट्स बहुत आराम से बन जाएंगे. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सेमेस्टर स्टार्ट बाद में हुआ पहले नोट्स बनाने लग जाओ, नहीं. जस्ट 1 मंथ बिफोर द एग्जाम फोकस करके, फुल फोकस करके पढ़ने लग जाओ, स्टार्ट मेकिंग नोट्स एंड यू विल बी एबल टू मेक नोट्स. राइट, टाइम टू सिंक इन और सेटल इन योर सबकॉन्शियस माइंड. जब आप जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आपके ब्रेन को भी टाइम मिलता है कि वो एब्जॉर्ब कर सके, तो वो सेटल कर सके, और सबकॉन्शियस माइंड में आपका जो मटेरियल जो आप याद कर रहे हो वो याद भी होता है. राइट, तो नोट मेकिंग से इतने फायदे होते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो. राइट, विल हैव टाइम टू चेंज बुक्स और फाइंड बेटर मटेरियल. अब क्या होता है, मोस्टली हम एग्जाम से 1-2 दिन पढ़ना पहले स्टार्ट करते हैं, हमें बुक अच्छी नहीं लगती, उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है, मोस्टली टॉपिक्स कवर नहीं होते, या बहुत लेंदी दिया हुआ है, मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया हुआ, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है. बट हमें उसी बुक में से पढ़ना पड़ता है, बिकॉज एंड टाइम पे हमें समझ नहीं आता हम कौन सी बुक और यूज़ कर सकते हैं. बट अगर हम जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, इफ़ वी स्टार्ट स्टडिंग अर्ली, we can change our study resources, we can look out for options for substitutes. Right, so ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है. इवन ये भी एक बेनिफिट है, कभी होता है दैट एक बुक में सभी टॉपिक्स अच्छे नहीं हैं, बट 2 to 3 टॉपिक्स आर नॉट दैट गुड, देन यू कैन बोरो बुक्स और यू कैन गो टू द लाइब्रेरी, और यू कैन ऑल्सो फाइंड मटीरियल ऑनलाइन. बट फॉर दैट you need time, and so start early, and if you have to make notes you will start early. So develop this habit of making notes, which is going to really help you out. Easy to learn and revise from notes. Now, remember that when it's just 2 days left for your exam and you have your notes, right? You don't have to refer to the book. You have your notes for every topic. You just go through the notes and you're done, right? So it is easier and it is quicker then, right? And you can also create your short notes within your long notes itself. That is, this is your sheet. Leave this much of space on the side, right? And here you can note down your very short notes, which can be used for your last minute revision. Again, I'm saying watch the notes wala video to understand in detail. Okay, step 3 is write and learn. Once you're done with your notes, and the time of your exam has come, say you have 2 holidays, 3 holidays, 1 holiday, whatever, and you have, it's then you start learning. If you have 1 holiday, then I'll recommend that you should like learn, you have to do the learning part also earlier. But if you have 2 to 3 holidays, then you can do the learning part when your holidays, the exam holidays, are there for that exam. I hope you get the concept, right? So you should write and learn. मतलब नोट्स तो लिखे ही लिखे, इसके अंदर आप अपने रफ नोटबुक के अंदर, अगर ये आपकी रफ नोटबुक है तो हेडर पॉइंट है वो लिखो, और उसके नीचे क्या पॉइंट्स है वो लिखो. ठीक है, डू नॉट राइट द इंटायर आंसर व्हाइल लर्निंग, ओनली राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स फॉलोड बाय सब पॉइंट्स. राइट, this is what I swear by. Even today if I have an exam, I do that, and this is one of the best way to absorb the information, and easier also to remember, like in a way you're testing yourself. I would learn the notes and then I would write down not the entire answer, just the header and the sub points. This is one of the ways that I used to swear by. It has worked for everyone with whosoever I've shared this tip. Right, so I'm sharing with you also. A lot of you complain that you're not able to complete your exam. Now, if you write and learn, not only it will help you in learning, but it will also increase your writing speed, right?
And I can understand that because, in school we used to write a lot, but in college we do not write that much, so our speed जो होती है वो कम हो जाती है. Our speed is not that much, so to increase your speed also you should write and learn. That way your hand would not get tired. So I hope you understand. So that is one thing. And also another tip that is here is I would take to the exam half used pens. Half used pens are soft, and so that is what I used to do. I used to take a new pen, use it. When it's half, I'll keep it in my pencil box and use it in my exam, because then it will be softer. So that is step 4. Complete the syllabus in the evening if the exam is next morning. Let me give you an example. Say tomorrow is your exam, today is the last holiday that you have. So assumingly you should complete your syllabus by 4:35ish today, and you should start with your revision by 5 in the evening. Like tomorrow, कल तुम्हारा एग्जाम है, आज शाम को तुम्हारी वो रिविजन होनी चाहिए ऑफ द रिवाइज. You should revise the complete syllabus. Believe me, this is what I used to do. I used to complete my syllabus before evening. In the evening I would sit down with everything, my notes, and would revise, right? So we are going to revise the entire syllabus between 5 to 12, or sometimes it would go up till 1, but I would revise my entire syllabus and then sleep. So this was my first revision of the entire syllabus, right? Quick notes that you created are going to help. Remember, I told you that if this is your sheet, here you have your notes, those quick notes in your main notes itself. This is what is going to help you in quickly revising your entire syllabus, right? Revise again by getting up at 4 o'clock in the morning. Now this is your second revision. The first revision took here, right? The second one is going to take place. I used to see if the topics were a lot, I would get up at 4 in the morning. If they were less, I would get up at 6. If they were medium, I would get up at 5 and again go through my entire notes, like the quick points jo likhe hue, I would read them. And sometimes if the answer was very long or confusing, I would even write and see. And even in between 5 to 12 also, if sometimes I would feel that, oh, I'm not remembering, I would take a short test. वही अपने main points लिखने और sub points लिखने हैं, right? बिना देखे obviously. So by the time I am there to give the exam, my 2 major revisions of the entire syllabus have taken place. So that is going to make you more confident. Even if you feel that you do not remember anything, believe me, you remember a lot, and most of it you are able to remember. So this is what my technique is. Right now, the next tip that I have for you is, when you're doing this 5 to 12 wala revision in the evening, when you're done with your revision, like when you're done with one topic, what you should do is click images of your notes in your head. Do ting ting, like I would, that shot, what is it, kadach kadach wala scene, I would do in my head, and would click photographs in my mind itself ki ye hai, ye. And in the exam, if I would get confused or I won't be able to remember, I'll just focus on one point. So if I would just focus on one point and try to remember everything, and believe me, ye bachpana hai, but this works. Next is tip 2 is make funny combinations of the main points. I would do that so much, like make funny combinations of the main points. Anything, I would just make mnemonics जिसे हम कहते हैं फीफा रे और जा जा जा, anything, and would remember it. And in the exam I would write it like this, and sometimes the invigilator would see what is she doing, what is she up to, right? But that is what works. Like anything that works, anything that helps you learn is okay, right? So mnemonics, making funny combinations, is something that really works. Step 5, before the exam. I know before the exam you're studying, revising, but there's certain things that you need to do. One is to carry a watch that is allowed, right? Not any watch, any electronic watch is not allowed. So carry a watch that is allowed, a working watch. Next is divide time between your long questions and short questions. Now, one of the problems that students face is that they are not able to complete their exam. ठीक है ना? एक तो मैंने बता दिया कि you have to increase your speed, because when we are in college, our habit of writing for long hours is gone. While in school, we are habitual of doing that. But here, the habit is gone. So write and learn when you're preparing for the exam, number 1. Number 2 is that you should divide the time. So if you have 3 hours and you have to attempt 4 questions, so you will decide कि मैं 35 minutes में एक करूँगी, 40 minutes में एक करूँगी, या first 2 I'll give more time, last 2 I'll give less, whatever. And keep 10 minutes extra.
10 minutes extra. You should aim for completing your paper 10 minutes before the exam, and that really works. 6. Some of the hacks that I have for you. When you're giving the exam, note down the main points and its sub points at the back of the answer sheet after receiving the question paper. We know we have choices in every unit, every section, whatever way it is. If when you're done with choosing that which question you'll be attempting, what you should do at the back of your answer sheet, you should make parts like 4 answers attempt करने हैं, तो 4 चारों के आपने सिर्फ main point, that is the header, and sub points लिख लेने हैं, right? Main point and sub points. What will happen after that is you will be able to attempt the question tension free. नहीं तो पूरे एग्जाम में ये लगता है अरे मैं भूल ना जाऊँ, क्या होगा अगर मैं भूल गई, फिर हम याद करने लग जाते हैं, एक पॉइंट भूल गए तो जो आंसर दिख रहा है वो भी गलत हो जाता है. So and also normally when time is less, when less time is left, when you are there writing the answer, you tend to forget points. So if you have written, I guarantee you won't forget, number one, and even if you forget, you have your points written, so you are able to attempt the paper tension free. The exam, you're able to give the exam tension free. We tend to forget the pointers, but if pointers are written, you can freely write answers, right? Time for some bonus tips. So a lot of you have questions that we are not able to remember all the sections. Well, you don't need to. If you are able to remember sections, very well. If not, then you need to learn only very important sections or articles. Do not learn all the sections or articles if you find them difficult, right? ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे articles लिखो या sections लिखो, सिर्फ important वाले भी अगर लिख दोगे तो it will work, because this used to happen with me in the exam. I used to learn all the sections, then when I would go in the exam, sit for the exam, I'll forget everything, and then I'll be so underconfident that I've forgotten. So what I started doing was I would just learn the important sections, and that is what I would write in the exam. But what I would do is I would underline these sections, and so that they are visible that I've written a section. Either I would write it with a black pen, because in my college it was allowed to use a black pen and a blue pen. If it is not allowed, you can use a pencil to underline it. I know sections are really important, but how to make the answer attractive? Yes, I'm using the word attractive, is what to put in there, substitute for the sections. Instead of writing all the sections, the other thing that you can do is, what I used to do is, instead try to include the name of judgments in your answer. Write down the names of judgments and again make them prominent. Either write them with another pen or use two blue के भी बड़े shades आते हैं, तो अगर आप पूरा question paper pilot pen से attempt कर रहे हो तो judgments को you can write with a ball pen or some other colored pen, blue ही, or you can use a black pen or a pencil to underline the name of the judgments, right? Next, what I would do is I would learn the name of the judgments that are funny. These judgments, the old names, they were so funny. So I would particularly learn those names which I'm able to remember. Like I'll give myself options that कौन सी मुझे easily याद हो रही है, and वो मैं याद कर जाऊंगी, right? When it comes to judgments, you don't have to write detailed facts. Now, judgments के detailed fact लिखने की जरूरत नहीं है, unless and until the question is only for that judgment कि इस judgment का बताओ, तब हमें सब कुछ लिखने की जरूरत होती है. But if you're including the judgment in your answer, then you don't really need to write everything. You just need to write what was held in 1 to 2 lines, and you can move forward, right? You can mention 2 judgments together in which same thing was held. So this is another thing I would do. You will see in your books that if something is held in one judgment, in 4 to 5 others which are mentioned in the footnoting, same has been held. So I would choose from there. I would write name of 2 judgments and then what was held in this and that. So that way I'm making my paper attractive. Plus I'm balancing out कि मैंने sections नहीं लिखे हैं तो मैं ये judgments लिख रही हूँ, right? You cannot learn the entire syllabus by heart. Now, this is a conversation only, that you cannot learn the entire syllabus by heart. That is fine, that is okay, that is acceptable, right? So what you should do, you should learn the very, very important topics and very important topics. How to find these, I have done a video how to study for law subjects. In that I have told you previous year question papers को कैसे analyze करना है. वो video आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्या करना है, right? So number 1 is जो by heart learn करने हैं वो बहुत important करने हैं. अगर आपको उससे confidence बनता है, because mostly वही जो important questions हैं उसी में से कहीं ना कहीं घुमा कर आता है. वो मैंने आपको सारा explain किया हुआ है उस video में, right? अगर आपका ऐसे confidence नहीं बनता तो what you can do is, still not confident, read other topics so that in case you are required
to attempt a question from the topic that you have not prepared, well you are able to work your way out, right? तो आप क्या कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो उन टॉपिक्स को, अगेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, सो दैट अगर कभी गलती से आपका कोई टॉपिक ऐसा आ गया या आपको लग रहा है कि मैंने सब कुछ कर लिया बट यार ये एक टॉपिक है जो शायद आ जाए और मेरे पास टाइम कम है, तो जस्ट डोंट मेक नोट्स, नथिंग, just quickly read the topic, try to understand it so that you can construct a good answer in case by chance वो आ जाता है तो, right?